Hello learners, I welcome you all in today's live program on the topic National Income Measurement. In previous program we have already discussed about how to estimate, how to calculate national income by value added methods. That is well known to us that there are so many methods to calculate national income, under which we have discussed the value added method for a comprehensive knowledge about the various activities which are taking place in an economy and how they are contributing to calculate national income of the economy. Okay? So, it might be possible that the different methods are very much relevant in different types of economy. As you know it very well that India is an agrarian economy, so most of the stress and focus is given on value added method, because under primary, secondary and tertiary sector many activities are performed and income are generated. After that, the next we see that income method. What happens in this? Why there is a, basic difference in methods of calculating national income? Under this income method, what we do? We know very well that the factors of production are taken into consideration, that is also known as factor income method or factor payment methods. Let me ask one question. What are the various factors of production which are used in the production process in our economy? You might be answering the question like this. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Let us see. Now, income method has to cross through the various stages. So, what are the main ingredients through which we able to calculate national income by income methods? So, these are the basic aspects, that is, income method is used for measuring national income at distribution level. Let us understand the relevance of the term distribution level. We discussed about so many times about 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Now all these factors of production are combined together to produce goods and services, and the same goods and services are sold in the market, through which income is earned. Now what happens? Again this income is distributed among
all factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. In what way? Land is receiving rent, labor is receiving wages and salary, capital is receiving interest, and entrepreneur is receiving profit. Clear? That is why the income is distributed among all these four factors of production. That is why it is called distribution level. According to this method, national income is estimated by adding incomes earned by all the factors of production for their factor services during a year. Okay. Now, what happens? Factor services. These factors of productions are providing factor services for producing goods and services. Now, goods and services are produced, these are sold in the market, and after selling these goods and services, an entrepreneur is earning income, and the income is distributed among various factors of production. Clear? Next to this, let us follow the different steps to calculate national income. The entire process is classified in 3 steps. First one is classify the production units into primary, secondary and tertiary sector. This classification is same as in value added method. Again we come to the point on the occupational स्ट्रक्चर. हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की ढांचा क्या है, कैसे उससे हम डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. प्राइमरी सेक्टर, दैट इज वेल नोन टू यू. सेकेंडरी सेक्टर, that is called industrial sector. Primary sector is known as agriculture sector, secondary is known as industrial sector, and tertiary is known as service sectors. So then what we see, we study about these various sectors of the economy as well, and then we see that how to apply income method in the estimation of national income. So at first step, come to the next step, that is estimate the following factor income paid out by the production unit in each industrial sector. What happens in this? See, industrial sector basically talks about the secondary sector. Clear? What happens in secondary sector? Industries are established under which we estimate the expenditure made on various factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. And after producing goods and services and earning income out of that, these are distributed among the different factors of production. So, these factor incomes are classified in 3 parts. First is compensation of employees. यहीं पर शिक्षार्थी आप लोगों ने समझना है, तब जाके इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट जो है वो आप समझ पाएंगे और इस प्रोसेस को समझ पाएंगे. क्लियर?
First is compensation of employees. What does it talk about? Compensation of employees. See, if we talk about the definition part, अगर इसे परिभाषित करें हम तो क्या पता चलता है कि ये लेबर फोर्स जो है, जो हमारे श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक श्रम जो हमें प्रदान करते हैं, उसके बदले में उनको कंपेंसेट करना, जितनी एनर्जी और जितनी पोटेंशियल वो लगाते हैं उसके बदले में उन्हें रिवार्ड के रूप में वेज एंड सैलरी प्रोवाइड करना। बट अगेन क्वेश्चन इज देयर कि ये हमारा मजदूरी जो है, ये हमारी क्या कहेंगे उसको, सैलरी जो है, अर्निंग जो है, वो किस किस रूप में दिया जाए और कैसे दिया जाए। बहुत बारी आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कैश पेमेंट की जाती है मानसिक और शारीरिक श्रम के बदले, फिजिकल और मेंटल लेबर के बदले। बहुत सारी जगह जो है बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, काइंड्स के रूप में जो है उनको कंपेंसेट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह में और भी मेथड यूज की जाती है, कैश के अलावा जो भी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती है, और उसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है कि इतने साल नौकरी और काम करने के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी में बाकी कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, वो सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको पेमेंट की जाती है या दिया जाता है, जिसको हम पेंशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कंपोनेंट जो है बेसिकली इंक्लूड होंगे, वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। ओके, काइंड का मतलब यहां पर सुविधाओं से है और उनकी जरूरत के हिसाब से वो चीजें प्रोवाइड करने से है। जैसे आप आर्मी की नौकरी की बात कर लें, वहां पर उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, कपड़े, जूते, जितने खाने पीने की जरूरतें हैं, वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाती है काइंड्स के रूप में। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो है एज कंपेयर टू द सिविलियन वर्क, उनकी सैलरी कम होती है, बट उनको जिस परिस्थिति में वहां रहना पड़ता है वो शायद उनको अपने सैलरी से उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। सो व्हाट हैपेंस, गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड, प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज just to provide security to the nation. Okay, so this way काइंड्स के रूप में भी वो सारी वेजेज जो है उनको रेम्यूनरेशन, रादर वी कैन से दैट फैसिलिटीज काइंड्स के रूप में उनको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में आपने प्रोविडेंट फंड का नाम सुना होगा। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? उनके सैलरी में से, एम्प्लॉयज के सैलरी में से डिडक्ट करने के बाद भी सेम अमाउंट जो है एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जनरली माना जाता है कि 60 साल के बाद इंसान काम करने की पोजीशन में नहीं रहता है, तो अपनी बाकी की जिंदगी को जीने के लिए उन्हें इस तरह के कोष तैयार किए जाते हैं, इस तरह का फंड क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो अपने आगे की जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सके।
Pension is also the parts of, because how pension is earned. Again question is there. But don't go in details. We are not talking about government rules or regulation here. Just to make you aware that compensation of employees includes all these things which will help to estimate national income. पेंशन का यहां पर मतलब है कि आप जब काम करते हैं आप उसी समय अपनी पेंशन को अर्न भी कर रहे हैं. What happens in present day scenario? Your salary is, big, too much high, and the scheme has been withdrawn, that no pension will be provided. And once what we see there, I don't know, it is the government policy and what is the objective of the government, we don't bother about this. But what happens in corporate and private sector? They do not provide any type of social security. वो भी अगर रूल्स रेगुलेशंस के तहत ना बना होता, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ESI, ग्रेचुटी, ऑल दिस थिंग्स, तो शायद वो कुछ पेमेंट ना करते हैं. लेकिन this is legally binding upon them to make such type of payment, to maintain such type of record, just to provide the security of the workforce and to utilize their fuller potential at present time. But it could be possible once you provide the opportunity to save their future. Otherwise, they cannot be able to utilize their full capacity, efficiency, skills and knowledge. Clear? Khair. Once again, mainly we are talking about the components of the compensation of employees. Next to this, operating surplus. How we will understand? ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? सो सिंपल वे, एक लाइन में इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं. आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स, सारे खर्च भुगतान करने के बाद जो हमारे पास बच जाए वो सरप्लस है, उसको हमें ऑपरेट करना है. दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस. हो गई आपकी कहानी खत्म ऑपरेटिंग सरप्लस की? नहीं. लेट अस talk about the components of operating surplus. क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? कंपेंसेशन आपने पे कर दिया, इट मीन्स दैट कि जो आपने वर्कफोर्स यूटिलाइज किया था, वेजेज एंड सैलरी के रूप में, कैश एंड काइंड के रूप में, सोशल सिक्योरिटी के रूप में, पेंशन के रूप में, ये सब सारी पेमेंट आपने कर दी. अब जो रिमेनिंग आपका अर्निंग है, इनकम है, उसको ऑपरेट करना है. उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स. व्हाट आर दीज 3 कंपोनेंट्स? First is land. Is a factor which has not been paid a single amount, that is paid in the form of rent. That is paid in the form of rent. Next is capital.
capital is earning what? Interest. And the third profit, entrepreneurship. Paid in the form of रेंट. उसकी जो अर्निंग हो गई वो रेंट के रूप में हो गया. ठीक है. हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन रेंट. समझने के लिए जान लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग इज कॉल्ड रेंट. But we are not concerned about the, theoretical aspects of rent. Here we only understand the concept land is earning rent out of using for the purpose of producing goods and services. Next is capital. Capital means money, huge money, big money. बैंक में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, कई जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्याज वसूलते हैं. किससे? मनी से. तो मनी की अर्निंग क्या हो गई? कैपिटल की अर्निंग क्या हो गई? इंटरेस्ट. अगर आपने किसी ने फंड किसी जगह लगाया है प्रोडक्शन प्रोसेस में और 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए उस कैपिटल की अर्निंग क्या होगी? आप बैंक में जाते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए, क्या करती है बैंक? पैसा आपको उधार देकर, लोन देकर आपसे इंटरेस्ट अर्न करती है, और उस इंटरेस्ट से अपने पूरे इतने बड़े कंट्री के नेटवर्क को वो मेंटेन करती है, अपने एम्प्लॉयज की सारी खर्च उठाती है. Once I went to a bank and asked about, sir, you are collecting money and you are just giving it out to other people. How you people are working and earning money to support yourself and your family? बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब हम कभी छोटे से स्टूडेंट लाइफ में थे और ये बैंक के बारे में नया नया जानना शुरू किया था, तब की बात बता रहा. And the person was very good. He showed a very good behavior to make me convinced about, just like saying, बैठो मैं बताता हूं कि कैसे बैंक काम करता है. And you won't believe these things. Right from that time, I recall, मैं कितना भी theoretical aspects पढ़ लूं इकोनॉमिक्स के अंदर बैंक के बारे में, बट उस बंदे की वर्डिंग्स जो हैं वो हमें काफी हेल्प करती हैं. ये कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट भी हम बड़े इजी तरीके से सीख पाते हैं. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में अगर समझना है तो ये आपके पास एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है. यू मेक ए विजिट टू नियर बाय योर बैंक, यू आस्क अबाउट हाउ बैंक इज फंक्शनिंग, वर्किंग, व्हाई loans are guaranteed to other people, how producers are encouraged to take loan to increase the volume of goods and services, production process, to regulate production process, to produce a lot of goods and services to meet the others' needs, needs of the other countries of the world. इस तरह से इस चीज को अगर समझोगे तो वो चीजें आसान लगेगी, एस्टिमेशन में भी आसान लगेगा. आप इस चीज को अच्छी तरह से इंटरनलाइज कर पाओगे, फिर आपकी समझ बनेगी उससे. क्लियर? तो इंटरेस्ट की अर्निंग क्या है? कैपिटल की अर्निंग क्या है? इंटरेस्ट अर्न करना. फंड जब तक यूज होगा उसकी कितनी कमाई हुई, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुई, इन बातों का ख्याल कौन रखता है? एंटरप्रेन्योर, जो आपका लास्ट फैक्टर है. एंड आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट टू लैंड्स,
payment to, I mean, capital, what remains with the entrepreneur, that is called profit. अगर आप माइक्रो की बात करें तो प्रॉफिट इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट. लो, कहानी खत्म. नो, वी हैव टू बी develop our observations in the case, in the situation, I mean, in the case of estimating income. Profit has three aspects. Dividend, जिसको आप हिंदी में लाभांश कहते हो. Corporate tax, I think you might be aware about this term. कॉरपोरेट सेक्टर अपने प्रॉफिट में से वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को. एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ फंड ऐसे होते हैं जो रिजर्व कर लिए जाते हैं. सी, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस फंक्शंस आर टेकिंग प्लेस under the estimation, in the estimation of national income under income method. See the component, three components are there of profit. What are these? What are these? Dividend, corporate tax, and the last one is undistributed profit or retained earning of corporations, or retained earning of the corporations. So this way, these are the various components which help us to estimate national income. Clear? So this way we try to understand. One thing I would also make you aware about the term royalty, rent and royalty. Royalty is also a component which is taken to be the important element of the estimation of national income by income method. Right now, let us take a break. After break, the remaining part will be summed up for better understanding of the estimation of national income by income method. करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने Hello learners, welcome back to the program. Now the next component is mixed economy. What we were discussing about the various component of income method or the classification of factor income earned by various other factors of productions for the estimation of national income. What happens in this mixed income? How do we understand mixed income? As its name suggests us, mixed income of what? Mixed income of factors. Mixed income of factors, that is land, labor, capital and entrepreneur. This is also termed as own account production. This is also termed as own account production. Rather, in other terms, self-employed production. Yeah, self-employed earnings. How do we understand? That is found a small country, developing countries like ours, where economy is not too much advanced. Still we are trying to moving towards the queue of developed economy. So in such type of developing economy, what we find, what we see, that small businessmen are there. Their earnings are also taken into consideration in the estimation of national income. That is why it is known as self-employed factor income and imputed income of an individual, like this. So all these things are the parts of the mixed income. जैसे आप एक स्मॉल बिजनेसमैन को देखें जो एक शॉप लगाता हो, जो एक छोटी छोटी जो है दुकानें खोल के बैठा हुआ है, what the person is doing,
all these factors which are used in the business that belongs to the person himself, herself. He or she uses his own land, her own labor. They are investing capital in the business, and the persons, the individual is able to earn profit out of that business. So, in developing countries, such a provisions have also been taken into consideration with the estimation of national income. But in developed economies, such type of things are rarely found. People do not believe in this type of earning and they do not estimate because they make a very negligible contribution in the estimation of national income. Okay, let us see. So these are all four factors: earning of various factors of production. Now, after completion of second steps, we have been able to estimate income of the various components of income method, which I told you earlier that it is also known as factor income method. Land, labor, capital and entrepreneur, all these things are contributing in terms of various components of these factors. Okay, let us come to the next step. Step third. Take the sum of factor payments by all the industrial sectors to arrive at the net domestic product at factor cost. See, the explanation is written in a very brief manner. But the moment I explain all these things, या आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो देखो कि इसका इम्प्लीकेशन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, या इसके अंदर कितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं हर पॉइंट्स को समझने के लिए. What it talks about, sum of factor payments. It means that the factors which you have used in the production process, land, labor, capital, entrepreneur, all these factors are receiving payments from the entrepreneur who has taken initiative to produce goods and services. And this concept gives us, जब इसका सम लेते हैं हम तो हमें क्या मिल जाता है? ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट at factor cost. How do we understand the concept net domestic product? To understand this concept, let me discuss about three components for the better understanding of the estimation of national income. Now, under step 3, what we do? We try to understand three components, concepts. First is net versus gross.
अगर आपको कहा जाए कि कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे नेट और ग्रॉस के बीच में, तो आप क्या कहेंगे? करेंगे How do we understand the things? What is the basis of difference between these two? कैसे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझ पाएंगे? ग्रॉस और नेट के बीच में हमारा क्या अंतर है और कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक दूसरे से? नेट वर्सेज ग्रॉस, हमें क्या कैलकुलेट करना है? जब हम इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर हम जो बेसिस कैलकुलेट करेंगे वो डेप्रिसिएशन का लेंगे, ठीक है? Through depreciation, we make the difference between these two. Depreciation. Okay. Which we discussed already in the previous program. What happens in this? When we add up depreciation with net, we get gross. इसको कहते हैं कुल, टोटल। नेट को कहते हैं शुद्ध। इट मीन्स दैट कि जब हमें नेट कैलकुलेट करना हुआ, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है, तो देन व्हाट वी डू दैट, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, या इसको अदर टर्म्स में कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? द फर्स्ट स्टेप इज दिस, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड डिस्कस्ड. अब नाउ लेट अस कम टू द formula. How formula is there? What components are to be included in this? How we can be able to calculate national income? But two more concepts are there. Next is factor cost and market price. What is the basis of difference between these two? जब कोई गुड्स हमारा जो है प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता, कोई सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती, देन द कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट,
यानी कि जो फैक्टर हमने यूटिलाइज किया है उससे कॉस्ट पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट टू दिस, मार्केट प्राइस. व्हाट हैपेंस जब उन गुड्स को आप मार्केट में ले जाते हो सेल आउट करने के लिए, तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आई मीन सेल टैक्स, पहले उसके साथ ऐड करके उसके प्राइस को लिखा जाता है. जैसे आज की तारीख में आपके पास क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना. कोई फैसिलिटी आप अवेल करो, मेक टैक्सेस, मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज looking for your welfare. Government is paying her attention to provide all the facilities to the vast population like us, the welfare of the society, various type of opportunity to live a better life, good and standard life. How government is providing all these things? If government is not charging tax on these goods and services, now the government will do nothing. So, the taxes are charged upon the buyers and the sellers, things like that, and the other stakeholder of the transaction of goods and services. Clear? So, the basis of this based on net indirect tax. Net indirect tax. Clear? See. Market price versus factor cost. How do we calculate this? That is based on net indirect tax. Market price is equal to what? Plus net indirect tax. Indirect tax. Once you are said to calculate factor cost, what you will do there? Factor cost is equal to market price minus NIT. I mean to say net indirect tax. But again, one thing is there, that is what? How net indirect tax is calculated. See the small aspect concept of the estimation, otherwise you shall be missing a lot और आप अपनी न्यूमेरिकल गलत कर देंगे. Net indirect tax is estimated, calculated by taking the difference between indirect tax and subsidies. Indirect tax are those taxes which are imposed and levied on some person and the burden is transferred to the other person. What do you mean by the term subsidy? Subsidy talks about a motivational cards. I mean to say that the government provides the facilities, provides the grant, contribute and help the producers, encourage the producers
to establish the production units, produce goods and services for the welfare of the mass population, for the benefits of the population of the country, and then we will not charge a single penny as a tax from your business. So such type of subsidies are provided by the government, and on the other side the government is charging indirect taxes. That is why the difference between these two have been taken into consideration while estimating domestic product at factor cost and domestic product at market price. Clear? Next to this, what happens? The next concept is domestic versus national. What happens in this? How do we calculate and make differences out of these two? Okay, learners, now let us close the session right now. And this is the way through which we can be able to estimate and calculate national income. The remaining part will be discussed in the next program. All the best.